Good evening to all of you. Good evening to all of you. बाकी लोग कहाँ हैं? Okay. So UV फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोप लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एंड इसमें सिंपल जो बेसिक चीज़ें जो फिनोमेना इन्वॉल्व है दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक कांस्टेंट वेवलेंथ की यूवी लाइट दी जाती है which is the sample is irradiated with a फार यूवी लाइट 58 नैनोमीटर का यूजुअली जो हीलियम वन हीलियम से आता है, हीलियम रेजोनेंस लाइन से आता है, उसको यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और डिपेंडिंग ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी, जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, आयनाइजेशन एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द ऑर्बिटल एनर्जी, राइट, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। तो इस तरह से हमें पैटर्न मिलता है जो लास्ट क्लास में हमने देखा। Okay, so they will appear on the like this. If it is a simple atom, then ionization will lead to the photoionization would lead to this kind of spectrum. So corresponding to the filled orbital of different energy. तो जिसका जो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, फॉर दिस remember same h mu is the same, so energy required to eject this electron is very less, so rest of the energy is kinetic energy और वो आपको हायर वैल्यू पे आएगा, अपीयर करेगा। सो ये काइनेटिक एनर्जी को आप एनालाइज करते हैं कि कितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को, कि कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और उसी से स्पेक्ट्रम बनता है। अगर मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी के फॉर्म में भी रहेगा, रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में रहेगा, जिसको कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो जो एनालाइजर है, इट इज जस्ट लीनियर वेलोसिटी जो हो रही है उसको डिटेक्ट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा है जो मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस इन अ लीनियर फैशन। ठीक है, सो दे विल बी सो इन दैट केस द एनर्जी विल बी फर्दर reduced if a molecule is ionized. If you take out electron from a molecule, then this will be slightly less, energy will be slightly less. And then what you will find, vibrational lines will appear for each type of electron ionized, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में के साथ वाइब्रेशनल लेवल्स एसोसिएटेड होती हैं। सो यू विल गेट सेवरल सेट ऑफ लाइंस, एक बैंड जैसा आएगा, not a single line, but corresponding to one electronic state, one orbital, you will have one band, okay, which will have several, each of the lines in the band correspond to different vibrational energies। ठीक है, तो इसी को लेके कुकमैन्स थ्योरम एक उसमें था कि कुकमैन्स थ्योरम समराइज करता है इसको। Each band in the spectrum corresponds to ionization of single molecular orbital, and each occupied molecular orbital of binding is less than h mu gives rise to a single band. लेकिन ये जो Cookman's theorem है, this is not always observed or not followed in all cases, and ये ब्रेक डाउन कर जाएगा उस केस में जहाँ पे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के लिए कई सारे बैंड अपीयर होंगे डिपेंडिंग ऑन द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वैल्यूज करस्पॉन्डिंग। सो एल प्लस एस जो जे है वो अलग अलग होगा, और ऐसा कई सारे बैंड्स आ सकते हैं। देन so this is the rules is a simplification, and for some reasons it is not followed in all of them all time. So पहला केस था
Uh, so in some molecules there will be ionization accompanied with simultaneous excitation of second electron to another excited. So two electron process जब होगा तब भी ऐसा होता है कि you will get more than one band. So spin orbit coupling की बात मैंने already discuss की है. If you have two components, spin and orbital, they interact and give you several types of combinations. Then again you cannot get so the degeneracy is gone, and spin orbit coupling can give rise to different several bands. So d orbital जो एक पूरा originally degenerate था एक isolated case में, now because of the interaction of spin magnetic moment, orbital magnetic moment, there is change in the energies, and that is, and because of that we can get more bands as more than the bands as expected by Koopman's theorem. Thirdly, oxygen nitrogen का example है. Wherever you have unpaired electrons, in all these cases you're likely to get more bands than the occupied orbitals. So three reasons, three cases when Koopman's theorem is not followed. So पहला एग्जाम्पल जो हमने दिया था वो कल की क्लास में शुरुआत ही की थी. मरकरी एक एटम के एक्साइटेशन का शेयर किया था आपसे. द p photoelectron spectrum for mercury excited by 58 nanometer helium line. So this is the अल्ट्रावायलेट लाइट, फार अल्ट्रावायलेट रेंज में आता है 58 नैनोमीटर. सोचिए आप लोग जो स्पेक्ट्रम लेते हैं उसमें 200 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है, तो ये उससे कितना कम शॉर्ट, हाउ energetic this UV light is. This is much more energetic, which you can't get from a D2 lamp. आपके जो UV visible स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें ड्यूटेरियम लैम्प यूज़ होता है, उसमें कैपेसिटी नहीं है इस तरह के 58 नैनोमीटर की अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस करने की. वो 185 से 200 के 300 तक 350 तक वाले रेंज में देता है. Okay, so when this is done, so look at the what is the axis current, photoelectron current. इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट जनरेट होगा, ठीक है. और so you can plot on the x-axis either the energy, kinetic energy of electron, so kinetic energy of electron, or you can plot the ionization energy x-axis पे. तो ये दोनों काफ़ी कॉमन है, यूज़ किया जाता है. So in one case it is in increasing order of the kinetic energy left to right, or ionization energy increases from right to left like this. So for the same, both these peaks correspond to d orbitals, and so due to spin orbit coupling you have spin multiplicity, the j value is different, 3 by 2, 5 by 2 like this, and you can see that 5 by 2, this one is more intense, this is less intense. So d orbital से दो जगह पे आपको लाइन दिख रही है, लेस इंटेंसिटी की एक छोटी सी लाइन d3/2. सो रेशियो देखिए ऑलमोस्ट 6, हाँ. So it is the ratio, so you can see that the d2 so d5/2, that's the line that is more intense, and the 3/2 line is less intense. The other one is appearing from the so electron, so यहाँ पे क्या था, electrons removed from d orbitals, and this is appearing when the electron removed from s orbital. So these are two kind of things that you can feel very small intensity. So ये इस पे भी डिपेंड करता है कि how many electrons are there of the same type.
तो जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल होगा वहाँ पे of course if the population is large and one of them is ejected, so chances of chances of ejection, the probability that electrons will be ejected will be high, and so you will have signal will be high. So d orbitals आपका d10s2 ऐसा configuration है ना. What is the configuration of mercury? Mercury वाले में 5d10 6s2 होता है. So you can expect, anyway you can expect, because of this reason कि S वाली जो line होगी वो less intense होगी, so only 2 electrons are there, whereas in d orbitals you have 10 electrons. So of course the combined picture of d orbitals, so when spin orbit coupling के साथ अगर देखें दोनों line को जोड़ के, तो बहुत intense होगा, उससे 5 times. So this is analyzed over here. So always remember, in this case the absolute intensity have no physical significance, but relative intensities tell you a lot of thing about the energy dynamics in the system, okay, of the electrons. So relative intensity is more meaningful, and this is what we have to, we always look one with compared to other, ऐसे हम देखते हैं, और इससे हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है about the process that is happening during the creation of this. Okay, so 3 स्केल दिया हुआ है, बट आपको मेनली आपको कंसर्न रखना है इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, सो बोथ रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. ओके, सो जो हमने स्पेक्ट्रम दिखाया वो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द स्पेक्ट्रम कहलाता है. सो दिस इज मोस्ट कॉमन जो यहाँ पे हमने देखा. This is the differential form of the spectrum. This kind of spectrum is differential form of spectrum. इसके against में एक, in contrast to this, we also have an integrated form of spectrum where the energies will always get added up like steps. So differential form of, okay, so there is also an integral form where all the electrons of more than a certain energy can reach the detector simultaneously, and in this case what we have, the spectrum will appear like this. So ये step like appearance आता है, तो इसमें area under the peak को वो integrate किया गया है. So area, so we take the area under the peak, जो पिछला ग्राफ था डिफरेंशियल फॉर्म में, उसको एरिया अंडर द पीक अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये द ग्राफ अपीयर्स लाइक दिस, एंड देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ दिस थिंग. सो अब जो लिखने का तरीका होगा, जब भी आयनाइजेशन इवेंट होगा, आपने यूवी लाइट दिया, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, so electron is removed from a certain orbital, so you always give a superscript with -1. So if the ionization happens from 6s orbital, then write 6s minus 1 is the ionization process. If the electron is removed from d orbital, then you write 5d minus 1 ionization process. So the term symbols that have been given for the ionization of mercury atom, these two states refer to the ionization from 5d orbitals. Okay, so this is due to this again represents the breakdown of the rule, one band per orbital, Cookman's theorem, and this is due to the spin orbit coupling. Okay, and in case of noble gases, in a similar way, if you find for noble gases the p orbital is complete, p6 is the configuration, and if you take out one electron it is p5, and this so a 2p state splits into 2 states and gives 2 peaks in the spectrum. Okay,
So these are the examples where simple atoms you also have breakdown of the one peak one orbital, वो वाला rule follow नहीं होता है. So one band per orbital, this rule is not followed. So noble gases. So अब इसमें एक और चीज़ है जो आपने इंटेंसिटी देखा, रिलेटिव इंटेंसिटी का जो अंतर था, दैट इज ऑल्सो यू कैन प्रिडिक्ट. हाउ? यू कैन ऑलवेज स्टैटिस्टिकल वेटेज जो है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? सो डिजेनरेसी जितनी, सो 2J+1 जो होगा, सो फॉर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से जो J है, इफ यू नो द J वैल्यू L+S, J is L plus S. So if you know the J, you can predict the statistical weight which is equal to 2J plus 1. So इसका मतलब ये हुआ 2p5 3/2 है. So J here is 3/2, or which means 2J plus 1 is equal to 4. जब 2p half होगा, in this case 2J plus 1 is 2. So in case of noble gas, the two peaks, splitted peak, जो split कर गया, p में जो electrons है उनका ionization करने पे we expect a ratio of 4:2. So expected, so what is happening here, expected ratio of intensities to p 3/2 is to 2p is actually it is 4:2. So 2:1, 2:1 के रेशियो में आना चाहिए. ये हमारा एक्सपेक्टेशन है. जे से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं. और इनफैक्ट इट इज फाउंड, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड टू बी करेक्ट. It has been observed to be exactly in the ratio of two peaks appearing in the ratio, intensity ratio of 2:1. So noble gas ionization always gives the ratio, if you are looking at the p orbitals, 2:1. Okay, so तो ये हाँ, तो 2:1 की इंटेंसिटी रेशियो ऑब्जर्व in, it is indeed observed in case of I should have put some figures for this. I just missed on that. Okay, next, इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करें मरकरी की आयनाइजेशन, जो अभी हमने स्पेक्ट्रम दिखाया 5d ऑर्बिटल से, जो दो आयनाइजेशन प्रोसेस होते हैं, एक करस्पॉन्डिंग टू 2d 5/2 और ये 2d 3/2, ये दो जो, सो इंटेंसिटी रेशियो इज appears, so expected is 6:4 के is expected, but it is in actually it is found to be 6:2.4. ठीक है. So ऐसा, so the ratio is slightly different from the what is predicted, but so इसका मतलब ये है कि कुछ और भी फैक्टर है, not just the spin orbit coupling, but there are certain other factors which are also controlling the relative intensities. इसलिए थोड़ा सा ये exactly 6:4 नहीं आया है, 6:2.4 आ रहा है. So we will discuss those factors later on when we come to the so let's first discuss the simple cases. The photoelectron spectrum of nitrogen. राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन का ऑर्बिटल डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. लेफ्ट हैंड साइड में we have plotted the ionization energy versus
सो देखिए कलर कोडिंग बहुत सिंपल है। 3 सिग्मा जी, ये जो पहला है रेड कलर 3 सिग्मा जी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वाला स्पेक्ट्रम आएगा। ठीक है, तो इस सो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर दिस वन इज द लीस्ट। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, सबसे हाईएस्ट एनर्जी का हाईएस्ट ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल है, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ओके, सेकंड जो आप देख रहे हैं, दूसरी पीक कौन सी तरह है, ग्रीन, जो पाई ऑर्बिटल है उसके करस्पॉन्डिंग दिस इज द बैंड दैट वी आर गेटिंग। ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं इस, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब। So if the ionization happens from the pi orbitals, the 2 pi orbitals that is shown over here with the green, then this green band here this is the band that will appear. Okay, ये वाला बैंड अपीयर होगा। और तीसरा क्या है, ब्लू वाला जो देख रहे हैं, जब 2 sigma u यहाँ से, so electron ejected from this, then you will this will appear as, so you can see that very carefully. It is plotted on the x-axis, we have it is the ionization energy, तो least ionization energy जो सबसे ऊपर वाला है, सबसे कम ionization energy पे appear होगा। उसके नीचे वाला next it will appear, uh, the orbital next to it will appear next higher ionization energy, and then this one will appear around 18 around 18-19 के बीच में आएगा। सो इस तरह से आप देख सकते हैं। सो एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। सो ध्यान से देखिएगा, यही मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि सिंपल मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास आपको दे दिया जाए तो आप फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यू कैन मेक आउट व्हाट काइंड हाउ द it will look like, the photoelectron spectrum will look like, uh, uh, so this is the case. Then you also see that there are number of lines appearing in this। एक बैंड में जो कई सारी लाइंस है, each of the lines correspond to different vibrational so each of the lines correspond to different vibrational levels। okay, so this they correspond to different vibrational level, and this is the separation between the two lines actually correspond to separation between two lines correspond to the difference between separation between the lines, give you an idea। so क्या होता है कि N2 is a neutral molecule, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, N2 plus आयन बनेगा। so you are having N2 which is now becoming N2 plus cation, molecular cation, right, molecular cation। so this molecular cation, if the bond strength is weakened, if bond becomes weaker, then the separation between the vibrational levels, so this thing is representing the separation between the vibrational levels of N2 plus ion। मॉलिक्यूलर आयन जो बन रहा है, जो सेपरेशन बिटवीन द लाइन है, वो उसको इंडिकेट करता है। सो अब क्या है, दो तीन चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, what will happen, the bonds will become weaker, जो bond strength है that will decrease। so in that case the separation between the vibrational line will also decrease। in another case, if the electron is removed from anti-bonding orbital, then separation between separation between the vibrational levels will increase। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से जब आपने ये कर दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो वो तो bond is like, so bond strength will increase, two things happen।
So this is anti-bonding in nature, this is anti-bonding, this is bonding. So you can clearly see anti-bonding orbital से जब होता है spacing between spacing is large, spacing between two lines within the band. So that means this is because vibrational levels, separation between the vibrational separation has increased, which means bond strength has increased. So ये आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज्ड. सो ऐसा हमेशा एक ट्रेंड देखिएगा जब, और इससे ऑर्बिटल्स की पहचान होती है. व्हेन यू लुक एट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम एंड इफ यू फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस हैज इंक्रीज्ड, the bonds have been strengthened, that means the nature of that orbital in the original molecule was anti-bonding. If the separation between the lines has decreased as compared to the molecules, separation between the lines actually correspond to the separation between the vibrational levels, vibrational energy levels. So if that increases, that means so that means if the separation between the lines has decreased, that means वो bond strength कम हो गया है. So bonding orbital में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ग्रीन वाले में स्पेसिंग कम है, उसको इंडिकेट कर रहा है. ब्लू वाले में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकाला गया है, द vibrational levels, so bond has become stronger, and so spacing between the levels, spacing between the vibrational levels has increased. तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है. So that is the thing that has been described here. Sharp peak at 15.6. Second, the group of peaks appeared which is 16, 18, 16 and 18, and the weak peak appearing at 18.8. So 3, 18.8, 16 and 17 यहाँ पे, और एक यहाँ पे शार्प पीक पहला वाला. सो देखिए, सो इस तरह के आपको सारी चीजें आती हैं. Each electronic state actually gives a group of peaks and it tells you about the vibrational so each electronic state is उसमें कई सारे vibrational levels छुपे होते हैं. So that information is also you can extract from this thing about so each peak that you are seeing, resolved peak in the spectrum, it is corresponding to a single vibrational line, and so it tells you about quantum of vibration in the molecular ion. so जो डेजिग्नेशन अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स यूज किया गया है, सिग्मा जी, कैपिटल सिग्मा, कैपिटल पाई, ये सब टर्म्स यूज किया गया है. सो बेसिकली बट यू शुड नो कि आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या क्या था, वो लेबल करने का तरीका इस तरह से आप देखिए. -1 मतलब किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाला. सो 3 प्रोसेस था इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन, एक सिग्मा जी, पाई यू और सिग्मा यू, अनजीरेड, जीरेड. सो इसमें से एक एंटी बॉन्डिंग नेचर का था और बाकी दोनों बॉन्डिंग नेचर के हैं. सो अकॉर्डिंगली थिंग्स appearing, you have seen that when anti-bond electrons are removed from the anti-bonding orbitals, a group of lines appear which are farther apart. That means the bond has become stronger, k, the force constant has increased, and so you have got that spacing has increased between the lines within the band. एक band में जो lines है वो सब उसकी बात कर रहे हैं. So 3 bands in the spectrum, and they tell you different stories, and they tell you about the vibrational quanta in the ions. Vibration, they tell you about the spacing between spacing of the vibrational levels in the
molecular ion that has been created. So you understand this thing already. So, हम लोग पहले vibrational levels को discuss कर चुके हैं. So you understand that it is V plus half h mu. So what you have in bond. So assuming it to be harmonic oscillator, mu is k by mu. So it is a force constant that undergoes a change. जब ionization होगा, k changes, k will change as k changes as bond strength changes. और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन आप किस ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग से निकाल रहे हैं, उस पर क्लियरली डिपेंड करेगा. के विल चेंज एंड अकॉर्डिंगली यू विल सी द एनर्जी लेवल्स spacing, the vibrational spacing will change, and so that will clearly appear as within the bands the lines will have different spacings. ठीक है. So if a bonding electron is removed, the bond becomes weaker and the force constant is less, and then less as compared to the neutral molecule जहाँ से आपने start किया था, N2 से start किया था, N2 plus बन गया. So neutral molecule से एक molecular cation बन रहा है, and the vibrational frequency in this case will be lower. Now the second, so this is the kind of thing that happens, we have just seen in the spectrum. So frequency drops from 2360 cm inverse in N2 to 1800 cm inverse when the electron is removed from the pi orbital. जो बॉन्डिंग नेचर का था उसमें से आप जब निकालते हैं तो सीधा अराउंड 500 cm इनवर्स का डिक्रीज मिलता है फ्रीक्वेंसीज में. दिस रिडक्शन इज by a factor of 1.3, and that shows, this is the proof that these are the bonding, these are orbitals, this is the bonding orbital of the molecule, bonding orbital, molecular orbital. तो उस नेचर को प्रूफ करने के लिए बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है वो भी इससे हो जाता है. So you get to know about the nature of the orbital, whether it's bonding, anti-bonding. You also learn about the vibrational levels of the molecular ion. Okay. So when it is the anti-bonding orbital से ionization कर रहे हैं, if the electron is removed, then it will lead to increase in frequency because the bond strength will increase, so vibrational frequency will increase, right? K is increasing. So the two types of, so this is what we are looking at. You have a neutral molecule N2 और फिर आपका ये क्या है, like you have N2 plus, ऐसी situation हो रही है. So this is what, and the ionization can happen in two different ways. एक possibility ये है कि आपने न्यूट्रल से स्टार्ट किया, इसके ग्राउंड स्टेट V इक्वल टू 0 से, और ये क्या था, ये एक्साइटेड स्टेट का प्राइम अगर हम लिखते हैं, ठीक है. So if the transition happens in the molecular ion, V0 से V0 में ही रह जाता है molecular ion में, तो that is adiabatic transition. But if it is transition is happening from V1 V2, देखिए, if it is happening, the transition is happening like this,
सो देखिए इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं. So this is vertical ionization. In this case, the value of uh, you can see that transition is happening from V is equal to 0 in the. So molecular vibrational molecule जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन जब आयन बना तो वो वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट में है. सो ऐसी सिचुएशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इन दिस केस, so what is happening is that most probable transition is corresponds to. So actually this, there are two things that can happen. If the bond length remains the same, internuclear separation is same, in that case best overlap will happen with in V is equal to 0 state. अगर इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर दोनों एटम के बीच का जो न्यूक्लियस का सेपरेशन है, सो डिस्टेंस वो अगर चेंज हो गया, मतलब बॉन्ड लेंथ चेंज हो गया. इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन का मतलब बॉन्ड लेंथ, ठीक है. सो अगर बॉन्ड लेंथ चेंज कर गया आयनाइजेशन के बाद, इन दैट केस 0-0 वाला जो ट्रांजिशन है, जो वाइब्रेशनल जीरो से मॉलिक्यूल का और वाइब्रेशनल जीरो आयन का, वो वाले पे वो वाला नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल और ओवरलैप ऑफ द वेव फंक्शन है वो अच्छा नहीं. सो वी हैव ऑलरेडी told you that there is a transition dipole which we had defined earlier in the second semester. You remember psi f mu I. This is the transition dipole integral. So this must be, has to be non-zero. Only then the net dipole is developed and transition happens. अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि अगर मॉलिक्यूल का लेंथ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो गया है, उस केस में द बेस्ट ओवरलैप बिटवीन द वेव फंक्शंस विल हैपन व्हेन द क्वांटम नंबर्स इज डिफरेंट. कैसे ये होगा ये हम आगे की पिक्चर्स के थ्रू बताते हैं. सो लुक एट दिस पिक्चर. सो ये तो समझ में आ गया कि पहले हमने दो तरह की आयोनाइजेशन बताई, एक वर्टिकल आयोनाइजेशन, एक एडियाबेटिक आयोनाइजेशन. और ये किन किन केसेस में हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसी को डिस्कस करते हैं. सो so so there are two cases that we are discussing. One case, no change. So neutral molecule, we are starting with a neutral molecule, and then two situations. Then we have two situations where on ionization molecular ion has same bond length if the bond length is same. Another thing is that when, if suppose the bond length has increased, the ion has longer bond length. Two situations यहाँ पे visualize की गई है. In this picture the two situations have been visualized. We are starting with a neutral molecule and we are drawing the potential energy diagram for the electronic state, ground electronic state for the neutral molecule for and the ion created. अब इसमें दो चीजें देखनी है. So if there is no change in the bond length, in this case, sorry, change in bond length, ये वाली सिचुएशन जो है same internuclear separation, same internuclear distance.
so it has same internuclear separation. Okay, in such cases the initial so this is the psi I, this is the psi f. So you are getting best possible overlap between the v is equal to 0 between the two set of wave functions, initial and final, which correspond to v0. And so in this case the maximum uh, so this is the one that line appears. So the transition v0 to v0 transition appears in this case if there is no change in the bond length of this thing. If the change in the bond length is happening, in that case molecular ion has a longer bond than the as compared to the neutral molecule. उस केस में ऊपर वाला situation है, the best overlap. So there are two things we have seen. Best overlap psi f, psi I. Best overlap happens with v prime 0 and v. सो जो लोअर वाला है और जो ऊपर वाला है, जो आयन है और मॉलिक्यूल है, दोनों का 0 स्टेट जो वाइब्रेशनल वाला है उसके बीच का ओवरलैप बहुत अच्छा होगा और इस केस में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस ट्रांजिशन की रहेगी. ओके, whereas in other case when this is not so and you are having the ion has a longer bond length, in that case you can see if the overlap, this line is extended, देन अगर ये मूव कर गया है, देखिए इसका जो ये वैल्यू है इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन वाला, ये चेंज हो गया है. ध्यान से देखिएगा ऊपर वाला जो वेल बना हुआ है उसका जो मीन पोजीशन है वो थोड़ा राइट हैंड साइड पे, एक्सटेंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हैज इंक्रीज, मतलब बॉन्ड लेंथ चेंज कर गया है. अब ऐसे चेंज बॉन्ड लेंथ में जब आप, क्या होता है कि द वाइब्रेशन इज हैपनिंग एज पिकोसेकंड टाइम स्केल. The transition, electronic transition happens at femtosecond transition. ठीक है, so it is 1000 times faster. So the nucleus, so immediately जब ये transition हो रहा है तो nucleus are not yet, vibration एकदम रुका हुआ जैसा लगेगा उस केस के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन कम कर रहे हैं. तो इस केस में जो वेव फंक्शन उस पोजीशन पे अवेलेबल होगा जिसके साथ क्रेस्ट विथ क्रेस्ट, देखिए यहाँ पे होगा तो ये क्रेस्ट विथ क्रेस्ट ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे क्रेस्ट विथ क्रेस्ट ओवरलैप कर रहा है, एंड यू आर गेटिंग बेस्ट पॉसिबल थिंग, बेस्ट पॉसिबल ओवरलैप. ओके, सो and so the chances of this transition happening is more. Whereas if you are looking at this particular thing, यहाँ पे ये zero हो जा रहा है, it is appearing as zero. So this v0 to v0 वाला जो है transition is not possible, वो वाला नहीं appear होता. So this is, so this kind of thing, so that is what we are saying, that if the bond length is longer you are getting the vertical transition is happening, happening has more probability. If the bond length is same, then it is the adiabatic transition that is happening. दो केसेस आप देख सकते हैं क्लियरली. लॉन्गर बॉन्ड लेंथ psi f, psi I, best overlap happens with v prime 2 और 4 2 3, ऐसा केस में ज़्यादा आता है. So, not with, so that is, so you are having so in case of, in this situation when the bond length in the molecular cation has longer bond length, internuclear separation has increased,
the dipole that develops, the transition dipole that develops, it is a result of overlap of higher vibrational levels in the molecular ion and the and the ground vibrational level of the neutral molecule. Whereas in the first case where I discussed, there was no change in bond length. Best overlap was happening when both were in the V0 state. So क्लियरली जो ये फंक्शंस जो है ना ड्रॉ करके आप देख सकते हैं, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि कैसे सब चेंज हो रहा है. So this is the dynamics that you need to understand from this picture. ठीक है. So adiabatic transition या vertical transition होगा दो केसेस में, वो मैंने बताया आपको. And this is something that we understand when we analyze the situation in the context of development of transition dipole. Okay, so आपको बहुत बारीकी से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया था उसको समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पोर्शन. ठीक है, उसमें भी ये सब चीज़ें थी, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, फ्रैंक कॉर्डन फैक्टर एंड थिंग्स. So it is related to that Frank Condon factor which I have already discussed in the third semester. Okay, so that is the molecular vibration that I was referring to in that process, as I told you. So many of the things which I have already said is already written on this slide. I am not repeating them. So ionization is a rapid process that I told you, femtosecond level पे होता है, whereas atomic vibration takes place at 10 to the power minus 12 scale. And so because it is 1000 times faster, the molecules appear to be frozen at the time the electronic transition is happening. The electron is being removed from this thing. उस time scale में वो रुका हुआ सा लगता है. So so internuclear distance remains constant during the transition, and the process can be represented as a vertical line by a Frank Condon factor. Okay, so these are things that we have discussed. Vertical transitions can proceed from any point. So molecules are always in their vibrational ground state at normal temperature. If there is no change in the bond length on ionization, the single transition from this state will be the vibrational ground state of the ion, which will be most probable. So maximum intensity, a single line will appear in the spectrum. So in this case, when ground state single line will appear, और जैसे ही आपका अगर ये केस नहीं है, बॉन्ड लेंथ चेंज कर जा रहा है, देन मल्टीपल लाइंस विल अपीयर, 2 3 4 स्टेट सबके साथ जो हमने बताया, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स. Okay, so the reason I have already explained. So overlap between the V0 level of the molecule and V0 level of the ion is large, and so transition dipole has a very significant, very large value for this particular transition, and that is the most intense. A single line will appear in that case. If there is a change in the bond length, through the picture we have already discussed, the largest overlap integral, this is gives you the transition dipole. This gives you what? This tells you about the transition dipole. So the transition dipole will be maximum for the excited vibrational levels of the ion. Excited vibrational levels of the ion. उसके साथ इसका, so ये वाली चीज हमने ऊपर देखा, अभी जो 2 स्लाइड पहले जो था, excited vibrational levels of the ion. So यही situation वहाँ पे डिस्कस की गई है. Okay. So in this particular case, a series of lines will appear. A series, whenever there is change in bond length, a series of line will appear. So ये जो बैंड में कई सारी लाइंस एकदम से एक इंटेंस लाइन और आजू बाजू में उसके जो वीक लेस इंटेंस लाइंस आती हैं, तो ये सारी इस तरह सीरीज ऑफ लाइन जितनी आती हैं वो चेंज इन बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज
डिनोट करता है। अगर सिंगल लाइन आती है दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द बॉन्ड लेंथ। सो ये सब चीज़ें हैं जो समझने की बात है। सो अब आप नाइट्रोजन वाले स्पेक्ट्रम को फिर से एनालाइज कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड दैट ऑल द थिंग्स आर नाउ गेटिंग एक्सप्लेन्ड। So you can now analyze again the nitrogen spectrum and so when you are having a transition from the pi u state that was ungired pi orbital जो था उससे nn bond length is affected, change in bond length will be there, but the ionization from the other two psi g psi u and so there won't be much change. तो मैक्सिमम जो इफेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चेंज इन बॉन्ड लेंथ का, जब आप बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, विच इज जो मोस्ट स्टेबलाइजिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल था उसको आपने जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकाला देन यू सी सीरीज ऑफ लाइंस. सो दैट सीरीज ऑफ लाइंस वाज यू सॉ दैट हैपनिंग हियर. कहा गया ये ये वाला ये जो था सीरीज ऑफ लाइंस. सो दिस वन वाज हैपनिंग हियर. ये चीज़ यहाँ पे हमने देखा. तो ये सारी चीज़ें वी हैव जस्ट सीन. सो in light of this understanding of the picture vibrational levels of the vibrational levels we can discuss. ठीक है. So this is why a series of line appear when the electron is removed from the most bonding orbital. मोस्ट बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो था आपका हाईएस्ट बॉन्डिंग नेचर वाला उसको आपने डिस्टर्ब किया तो आपको सीरीज ऑफ लाइंस अपीयर हुई. So change in frequency and change in bond length on I just reflect. So if the electron removed is bonding, an increase in bond length and a decrease in frequency are to be expected. ये सारी चीजें होंगी and vice versa is also possible. This is the spectrum of oxygen. ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम है और इसमें आपको कितनी यू कैन सी देयर आर 4 बैंड्स अपीयरिंग. ऑक्सीजन का भी आप सो देयर आर 4 1 2 3 4 bands are appearing and these are the labeling according to the molecular term symbols. ठीक है. सो अब इसमें भी आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट टू राइट हाईएस्ट आयोनाइजेशन 21, यहाँ पे क्या है 12 है, लोएस्ट इधर on the scale. Then what you see, so इसको भी आप एनालाइज करेंगे. सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर एमओ डायग्राम बनाएंगे. एमओ डायग्राम बना के फिर आप ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम and then start thinking about it, how which band corresponds to what. So you can start labeling from that. ठीक है. Continue this exercise. Let's continue this exercise in the next class. So अपनी कॉपी में ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम बनाइए. देन स्टार्ट. सबसे पहले सबसे आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, उसकी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, दैट विल बी बैंड 1. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, है ना, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. देन वेदर इट इज बॉन्डिंग इन नेचर, एंटी बॉन्डिंग नेचर है, तो स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस देखिए. इसकी स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन में जाने के बाद इसकी स्पेसिंग बढ़ गई है, यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस कम है. सो व्हाट डज दिस इंडिकेट, spacing is has increased as compared to this. That means bond length sorry मतलब वाइब्रेशन फोर्स जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन हो गया है, मतलब ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था क्या. जस्ट चेक दैट. फिर अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकाला गया है तो स्पेसिंग कम हो जाएगी, स्पेसिंग बिटवीन विद इन द बैंड जो लाइंस अपीयर हो रही है, जो डिफरेंट वाइब्रेशन.
उसके बीच की स्पेसिंग कम हुई. सो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नेचर दैट यू कैन चेक एंड टेल. ओके, सो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थोड़ा सोचिए इसमें और फिर हम आपको बताएंगे. सो द फर्स्ट वन वाज एंटी बॉन्डिंग. तो देखिए, एंटी बॉन्डिंग से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बॉन्ड स्ट्रेंथन हो गया. स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंट द स्पेसिंग बिटवीन द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. तो because the bond has been strengthened, k has increased, force constant has increased, and so large spacing is there. अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल से अगर आपने निकाल दिया तो बॉन्ड वीक हो जाएगा. बॉन्ड स्ट्रेंथ will decrease, k will decrease. So spacing between the lines which represent the vibration separation of vibrational levels in the molecular ion, that will be less. So spacing here has decreased. इस तरह से कोरिलेट करना है आपको. ठीक है, नॉट डिफिकल्ट. You can do this. So that way you have to analyze shortening of the OO bond, increase in the vibrational frequency. So these are the features that we see. We'll continue here in the next class.